श्रीवावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगे च सहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रिताः। ओम मानस्तोके तनये मानो आयुषु मानो गोषु वानो अस्वे सूरीरिषः मानो विरानद्रभामिनो भदिर्चिन्ता सदा मित्वा हवामहे। गंधम समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम सप्तसागरेभ्ये नमः। ओम इष्टदेवताभ्ये नमः। ओम कुलदेवताभ्ये नमः। ओम ग्राम देवताभ्ये नमः। ओम स्थान देवताभ्ये नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्ये नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्ये नमो नमः। बंबरणाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यगन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतामः धूपम् आग्रापयामि। बोलिवर्ण भगवान की जय। दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद् वायु च प्राण च मुखादग्निर्जायतः साध्यं च भक्तिं संयुक्तमनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आचमनी जलं समर्पयामि। पुंगीफलं समर्पयामि। पुंगीफलं महादिव्यं नागबलिदलर्तं एलादिचूर्णसिक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः सम्वर्तादग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासि सदाधार पृथ्वीद्यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विदेमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। कर्पूरनीराजनः ज्योतिः समर्पयामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोली वरुण भगवान की जय। पुष्पाणि समर्पयामि। बोले उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुभभयदं दक्षिणाङ्गे महान्तं नागं पाशं च घण्टादमरुकसहितं चाकुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। साम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमः। बोले शंकर भगवान की जय। शंभवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साम सदाशिवाय नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। साम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ निधनपतये नमः। निधनपतान्तकाये नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। हिरण्याय नमः। हिरण्यलिङ्गाय नमः। ॐ दिव्याय नमः। दिव्यलिङ्गाय नमः। भवाय नमः। भावलिङ्गाय नमः। सर्वाय नमः। सर्वलिङ्गाय नमः। हे तत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सत्यो जातं प्रबध्यामि। सत्यो जाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवो भवाय नमः। वादेवाय नमः। शेषाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमः। बलविकरणाय नमः। बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतधर्माय नमो। मनोन्मनाय नमः। शंभवे नमः। ओम श्री कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता चतुर्थी वैश्वदेवकांधम पंचम प्रपासना। ओम नमो भगवते रुद्राय।
ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तेषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृदया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापाप्रकाशिनी तया नस्तनवा सन्तमया गिरिशन्ताभिशाकशीः या मीशुङ्गिरिशन्तः सर्विवर्षस्तवे शिवां गिरिस्त्रित्वां कुर्माहि गंसेः पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वां गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्झगयदक्ष्मकं सुमना असता अत्यवोददधिवक्ता प्रणमोदिभ्योऽभिषकः अहीगस्य सर्वां जम्भयन्तु सर्वास्य यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अर्णपुत्रबब्लुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रोऽपितो दिक्षोषिताः सहस्राक्षो वैशागुं हेदईमहे असो यशो सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नदहार्य उतैनं विश्वाभूतानि सदिष्टो मृदयातिनः नमो वस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेदुषे असो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तिभ्यो करणं मम प्रमुञ्च धन्वनोद्भयोत्तरो राजयोजां याश्च ते हस्तैषवापराता भगवो वप अवतत्त्वधुनुस्वागं सहस्राक्षाशते शिते निशील्यशल्यानामुखा शिवो नमः सुमा भव विद्यं दनूकपर्धिनो विशल्यो वानवागं मुताम् अनेशनस्येष आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेजुष्टं हस्ते बभूवते धनुः तयास्मां विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायायुताय विष्णवे उवाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतुरस्मां वृणक्तो विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारुऽस्मन्नदेहितं शम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येदिशां जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः तस्मिञ्जराय श्रीमतीपतीनां पतये नमो नमो बब्लुचाय विद्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय बलानां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वाणिजास्तस्थधीनां पतये नमो नमः उचय घोषाय कृन्धयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णपीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिने आव्याधिनेनानां पतये नमो नमः कुकुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने इषिधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निषेधवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः पिकाविभ्यो जिगासभ्यो पुष्टानां पतये नमो नमो हस्मद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यो पुष्टिन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषमद्भयो दन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयस्तद्भ्यो वृषद्भ्यश्च वो नमो नमो अस्त्रभ्यो वृद्धिभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभद्भयो सुपद्भ्यो जावृद्भ्यश्च वो नमो नमः शिष्टभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आभ्यादिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिकं हतीभ्यश्च वो नमो नमो गृह्येभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रासेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमः सक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः
कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जस्तेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शिखरेभ्यो दन्वाकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगीयभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमः सभ्यः च प्रतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्जने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो नीरुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्ण्यां च वसन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वित्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः आशुषेनाय चाशुरुथाय च नमः शूराय च विभिन्दते च नमो वर्मणे च वरूथिने च नमो दिव्यने च कविचने च नमः सुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुप्त्याय च हनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमिषाय च नमो सूताय च प्रहिताय च नमो सुषङ्गने चेतिमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधने च नमः स्वायुधाय च सुगन्धने च नमः कृत्याय च पथ्याय च नमः कात्याय च नीत्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाभ्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वाक्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तूपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः चन्द्राय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आचार्याय च लाढ्याय च नमः षष्ठाय च ठेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो कोष्ठाय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः कात्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं सद्याय च हृदस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च शून्याय च नमः पर्णशध्याय च नमो पगुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विचिन्त्वकेभ्यो नमः विचिन्त्वकेभ्यो नमः आनिहृतेभ्यो नमः आमीर्वर्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभिर्मा रोमो येषां किं च नाम मत या ते रुद्रा शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृतजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय परभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे च दुष्परे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरं मृदा नो रुद्रोतनो मयस्कृदीक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यक्षं च योष्टमरुरायधि हिरात्तरश्यामतपरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षतु मत् मानो उक्षन्तु मान उक्षितं मानो वदीपितरं मुक्तमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषाः हस्तकेतनये मानो आयुष्यमानो घोषो मानो अश्वेश्वरीरिषाः वीरान्मानो रुद्र भामितोर्वधी हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते घोघ्न उत्पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधीच देव बृहिता च न शर्मयच्छद्बर्हाः सुहिश्रतं गरतसिदं युवानमृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रं मृदा चरित्रे रुद्रस्तवान्यो अन्यन्ते अस्मिन्नेव पन्तु सेनाः परिनो रुद्रस्य हेतिर्वृनक्तु परित्वेषस्य धुर्मतिर्घायो अवस्थिरामगवध्यस्तनुष्वमीदुस्तोकायतनयाय मृदय मीदुष्टमा शिवतमा शिवो नः सुमना भव
वरमे वृक्ष आयुधं निधाय कृतं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागिः विकिरदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुभोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृदै सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्र अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यव्रेन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवगं रुद्र उपश्रुताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो वशकासक्तपर्तिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्ष एलहृदयभ्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति प्रकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयावंसश्च दिशो रुद्रभितस्थिरे तेषावं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतिचीर्दशोदिचीर्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु तेयं विष्मो यश्च नो द्वेषितं भोजं विददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीशो यो रुद्रो विश्वभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षेति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो ओ मनसाय रुद्रं नमो ओभिर्देवमसूरं दिवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एष यो यकंशी शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमायितं पाशा मृत्युमृत्याय हन्तवे तान् यज्ञे समायया सर्वनवे यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्यायस्व ॐ नमो रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि सदाशिवोम् ॐ शान्ति 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 ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः
चितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवराचितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूर्याय विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारि सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवशलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसराचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं 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 तत्प्रणमामि
हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिस्तति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिर यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोले उमापति महादेव की जय। Right, everybody can bring prasad now. जय भोला बंदारी शिव हर जय भोला बंदारी
शिवकारी जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी निश दिन तेरा ध्यान करे हम सिमरे मंत्र तिहारा हे शिव शंकर मंत्र जगाओ होए घट उजियारा नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर कृपा करो त्रिपुरारी जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया युग युग से ये सृष्टि नाते ऐसा डमरू बजाया तेरी याद बुला के जग में तेरी याद बुला के जग में दुख पावे संसारी जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति युग युग सोया दीप जलाए शिव शंकर कैलाशपति डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति युग युग सोया दीप जलाए शिव शंकर कैलाशपति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय
निज भक्तन के कष्ट मिटाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया दीप जलाए, शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया दीप जलाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। जटा झूटे से झरती गंगा, भव के ताप मिटाती। जटा झूटे से झरती गंगा, भव के ताप मिटाती। धरती और प्यासी जीवों के मैया प्यास बुझाती। निज कृपा जग के बरसाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया दीप जलाए, शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया दीप जलाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंद माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर माध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गण राहु,
या छवि को कहीं जात न कहूँ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुआई। तुरत शदानन आप पधायहूँ, लवनी में इस महामारी गिरायहूँ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दान नमः तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दयातः करहि सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंका विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे युझोरी। कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए चितवर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहे मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहियान पारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहियान पारो, मात पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आये हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। जो कोई जाचे वो फल पाई, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्म
हादिक पार न पाया। जो यह पात करे मन लाई, का पर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पात करे सो पावन हारी। इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पात सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पात करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 ज्ञान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। उमापति महादेव की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशवाकाशवासं निराकार मोकार मूलं तुरीयं। गिरा ज्ञान गोतीतमीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं। गुनागार संसार पारं, तुषाराद्रिशं काशगौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। सुवर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसत भाल भाल चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं, मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीं पतिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोह पहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मंगलधारी। न
यावद्युमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुव्य जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश मीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। बोले शंकर भगवान की जय। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो। क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर दे। Bhagavati Mata Parvati, as you know, she took many avatars, many avatars, many forms, many lifetimes she was born to perform tapasya to Shivji Bhagavan. This is not because it is the nature of Shivji to allow someone to punish in sadhana, to struggle in sadhana, and to pray long to achieve him. But there is great pleasure in praying. There is a great deal of pleasure in dedicating one's life to attaining God. We have taken 8,400,000 births already. This last one that we have is the form that we should use to attain Bhagavan. Swami Rama from the Himalayan Institute, he told us that the world will be a better place when everybody becomes a little bit more spiritual. Why? Because we have to understand that this is the body. When there is sickness, miseries, union, yoga, viyoga, you know the usual things, opposites, then if we have the realization that we are here burning our karmas and enjoying the benefits of our karmas, then life will be taken a little bit more joyful than it is taken today. We were already a lion. We have eaten, or we ate enough proteins already in our life. We devoured our poison in so many ways as a snake, and we perform the insect behavior in so many ways. We stung already. We have done all those things. This is the birth that we have taken to elevate ourselves and to meet Bhagavan. Parvati Mata, मैं जन्म जन्म से करूं तपस्या, भोलेनाथ तिहारी मोहे अंग लगा दो, अपना बना दो, अर्धांगी त्रिपुरारी। अर्धांगी त्रिपुरारी, जन्म जन्म से कर तपस्या. Take my hands, O Lord,
as I submit them to you, Ma Parvati, saying, but let me become your devotee, because there is great pleasure in doing that, in serving Bhagwan. When she came as Parvati, she married Bhagwan Shivji. And on the day of her marriage, when she was leaving with Bhagwan Shiva, because then it is traditional for the girl to leave her home and go with her husband to new life. As she was leaving, Maina Devi, the mother of Ma Parvati, she goes quietly to Lord Shiva and she prays, Nath Uma Mam Pranasam Griha Kinkari Karehu Kshameu Sakal Aparadh Ab Hoi Prasann Vardehu. She prayed, O Shiva, my Lord, Uma, my Lord, or Parvati, my Lord, is dear to me as life itself. Parvati, my daughter, who you got married to today, is dear to me as life itself. Every parent will say this about their children or their beloved, My child is dear to me as my life. This is not how one parent feels, this is how every parent feels. Take her, my Lord, and pardon her for all her offenses and her mistakes. Let her be the servant of love in your home. Griha kinkari kareu. Let her pardon her mistakes. Be gracious now, O Lord, and grant me this boon, that you will allow her to express her love for you in your home. Bahubidhi sambhu sasu samjai, gavani bhavan charan sirunai. Janani uma bole tablinhi, मैं उछंग सुंदर सिखधीनी. Shivji Bhagwan did his best to reassure his mother-in-law, Maina Devi, as she bowed her head at his feet and went to her home. She then sent for Parvati Mata and she spoke to Parvati Mata. What did she say to Parvati Mata? करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा. करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा. वचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी. वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी. श्री राम जय राम, जय जय राम. 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 Karehu sada Sankar par puja. She was already a devotee of Shiva, and her mother advised her, as every mother will do, as we give our children, my friends, all the things of this world today, the material things that we never had, and I speak every day about this, our West Indian families especially, we want to give our children all the things that we never had. Luxurious things. There's nothing wrong with that. Please do not forget as well to give them Bhagwan. Don't forget to introduce our children to God. Right? Last Shravan, I told you about this, that in traditional times, the parent used to have a murti in their home, or various murtis in their home. And throughout their life, they will dedicate themselves to do puja to that murti, puja to that murti. And on the day when their child is leaving the home, or leaves the home in marriage to go to another home, or whatever the case is, they will present as a gift that murti to that child, introducing that child
well, not introducing the child to God, but when the world is giving the child present, the mother and the father presents God to them. Let us never forget to introduce our children to Bhagwan at a very early age. To let them take something from our culture at an early age. Because this rich, deep-rooted, beautiful culture that we are embracing was not just found on the street. Many, many people gave their life up. They gave their pleasures up. They gave the world up to ensure that we embraced it to the fullest. Maina Devi kare sada sankar pada puja. She said, my daughter, हे पार्वती तू शंकर जी के चरणों के सदा पूजा करना कि ये नारियों का धर्म की पति ही देवता है. Right? That the duties of a wife, she said, always worship Shankara's feet. Kare sada Shankar pad puja. Always worship the feet of Shankar. That this is the duty of a wife, for her husband is her deity and there was no other God for her. This may sound a little bit one-sided, that a wife has to worship a husband. That is true. Pati Dev, the word is used here. Nari dharma pati dev na duja. There is no other dharma, there is no other puja for a woman greater than Pati Dev, to honor her husband. And this may sound a little offensive to women, that you have to worship your husband, but I have news for you as well. You're called Dharma Patni. A wife is called Dharma Patni because you're the wife of Dharma. One thing always bothers me is when the ladies that are home, we call them housewife. Housewife. As though they're married to the house. We call them housewife. I don't agree with that. I mean, that is like calling that thing housefly. But it's right? Housefly. Because they're in the house occupying it. Then we say housewife. I think that it is not such a nice name because they're not married to the house. They're married to somebody. Pati Dev, the duties of the wife, they're called Dharma Patni, or the wife of Dharma, which means that the man should live a life of Dharma. You remember what Bhagwan Ram said to Bali? When Bali was dying, Bali said, Prabhu, why did you shoot me? He says, the same reason. What is the reason? When you look at a woman with disrespect, when you even look at a woman with disrespect, then you deserve this. It means that a man's duty as well is to treat their wife as the Devi of their home. Can you imagine how beautiful, can you perceive this? How beautiful a home will be if the man treats the wife as a Devi and the wife treats the man as a Devata. That home will be a home where Devata and Devi reside, where the God and the goddesses reside. That is when we are qualified to say that our parents are our gods, because they respect each other. The Hindu religion is so beautiful. It is so beautiful that there is no hierarchy in anything. The woman is not lower than the man, neither the man is lower than the woman. Both of them worship each other, qualities, and they depend on each other for upliftment. Today, there are many, many discrepancies with that because, one feels that I don't have to be dependent on the other, and that may be so in many ways. But let us not try to solve a problem which did not ever exist, right? This is love. Pati Dev, the Nari Dharma Pati Dev Nantuja. There was not a service like Nari Dharma. Pati Dev. Always worship Shankar. As she spoke these words, her eyes were filled with tears. And once more, she hugged Mata Parvati. She hugged Mata Parvati, and Mata Parvati as well started to cry. Why did God create women in this world, she asked. She said,
One who is always in a state of subjection can never even dream of happiness. Though utterly distracted by her exceeding love, Maina Devi, she knew it was time to display and to compose herself as the mother. She brought Ma Parvati to Shankar Bhagavan, and that's where the beautiful chant in the Ramayana, Janana hi bahuri mili chali uchit asis sapakha hudehi. Parvati Devi and Bhagwan Shankar appeared for the first time in the world as the mother and the father of the world. This is the devotion of Ma Parvati to Shiv Bhagwan. This is her love for Bhagwan Shiv, not as a wife. And she ended up being the wife of the Lord, but she spent her entire life, of course, in prayers and devotion to Shiv Bhagwan. May our prayers and devotion to the Lord always be pure and always be sincere, because that which is pure and sincere is always meaningful and will always be experienced in a very blissful way. Taking away the love for God, if our love for each other is not real, meaningful, then it will make no sense. We will feel distance in life. Even animal experiences, an animal experiences when you love them so much. Just to give you a light side of things, a few weeks ago we went back to Guyana just for a few days to see my sister. And there's a dog in Guyana, Sita's Mousie's dog. He's black, so we call him, his name is Blackie. And that's how you name things back home, right? If the dog is Brongy, name Brongy. Dog is Blackie, name Blackie. Nobody pays attention to him. He's all over the place. Nice guy. Last year when we went back, him and I bonded so well. We became friends. I paid him and thing. And they take care of him and so. But, I gave him a touch of love that, when I went back this time now, close to, not about 9 months after, I'd say, 10 months, 8, 9 months after. Oh, I saw him from a distance and he ran towards me. And he just, he started doing his little commotion, lie down on his back and roll over his belly and so on top. And he remembered because, I treated him with so much respect and love. I bathed him and so on. And this time I took Canadian dog treats for him, vegetarian dog treats, and he was so happy. And one day, the same day, we were sitting and talking, myself, Sita's parents, and so on. In the afternoon, we were sitting talking, the four of us. And then he was walking from afar afterwards. He's tired, and he come. And four of us were sitting there, and he came to me, and he started to rub his head on me. Now, I'm not saying that he loves me more than all of them, but I'm just saying that I talk to him. I rub his head. I rub his belly. I make him feel always so nice and like he's someone. And when that kind of love is genuine to a dog even, the dog will feel the love. The dog will feel the love and the dog will respond to that love. Imagine if we give that to a human being who has an elevated, state of mind, consciousness, whose heart Bhagwan resides in. Imagine how they will feel when we treat them like that. That is the power of love, and that is the power of Parvati Mata's love for Shankar Bhagwan. Bole Shiv Shankar Bhagwan ki jai. Reminding all of you, tomorrow is Tuesday. Temple is open all day. We have Hanumanji Chalisa in the evening, 6:30 p.m. to 7:30. And on Fridays we have, of course, we have Durga Ma Puja. Saturday coming is our walkathon. I hope that all of you are coming to the walkathon and you've had somebody to sponsor you, or at least you've made a small donation to come to the walkathon. It's fun. It is done right here in the compound. We walk out and we come back. There's a small team of people working on that. It requires a few people involvement, but lots of participation from you. We're looking forward for you to join us. You can also sign up online at bhavanishankarmandir.com/walk. Please come on out and join us for our walkathon. Following the walkathon, next week, Thursday, is Pradosh. And
Next week, Thursday, is Pradosh, June 15th, and we'll be observing on Thursday even Pradosh Puja at the temple here with 108 Shankar. We'll be bathing Lord Shiva. Please come on out and join us in Pradosh. Do some fasting if you can, and let us pray together for Bhagwan's blessings on everyone. Please also sign up for our Havan, 24-hour Havan. There is only 30-something spots remaining. In the 24-hour, we have 4 families per hour, and there's only 30-something spots remaining. So please sign up. You can go online, bhanishankarmandir.com/Havan. Choose your spot if it's available, and come on out. While there is no fixed fee that you can give, people have always made a small donation or a big donation, whatever you want on that day. You only have to bring your prasadam and flowers on that day, and we have everything else here at the temple. We hope to see all of you on the Havan, 24 hours, Saturday, June 24th, starting at 9 a.m. outdoors in the temple yard. Thank you all very much for coming this evening at the temple, and those online as well. We'll stand now for Aarti. Yani kani cha papani janmantar kritani cha tani sarvani nashyantu pradakshinam pade pade. Om Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Brahma Vishnu Sada Shiva Brahma Vishnu Sada Shiva Ardhangi Dhara Om Jai Shiva Omkara Om Har 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 Mahadev Ekanan Chaturanan Panchanan Raje Swami Panchanan Raje Hansasan Garurasan Hansasan Garurasan Vishwahan Saje Om Jai Shiva Omkara Om Har 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 Mahadev दो भुज चार चतुर्भुज दश भुजते सोहे स्वामी दश भुजते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाने शशिधारी ओम जय शिव ओमकारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं
मामदेव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति हरि ओम। पुर गणपति भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगदम्बिका माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो सत्य सनातन धर्म की, सबको ये जय जय सीताराम। I missed two announcements quickly. I appeal to all of you to come out and clean the yard and the grass and thing. There was a first cutting done on Sunday last. A couple of guys came out and did it, and ladies as well. So thank you. And the youth group, along with anybody else who would like to come, is assembling here on Wednesday evening. What time, Paniswara? 6:30. Most of the youths are coming. And if anybody else want to come, their parents or so, come on out. It requires a second level of cutting and tidying up, which they'll be doing. So not only cutting the grass has to be picked up and look nice and tidy. As long as we get a first cutting done, the rest of the year would be easy. So come on out Wednesday evening, whoever want to, and do that. And secondly, we're appealing for people who would like to be a receptionist at the front desk of the temple. If you have time during the day or in the evening, or especially in the weekends, Saturday and Sunday, we need your help to come and to answer the phones. We have receptionists, but we have some spots available. So please, you can contact me if you have my phone number. You can message me on Facebook, or you can email the temple, info@bhawanishankarmandir.com, and we'll get back to you. So thank you so much. Please sign up for the receptionist thing. We need your help with that. Thank you so much. Shubhratri.